To remain updated with the latest business news, click on the bell icon. Hello and welcome. You're watching Business Today. I am Sakshi Batra and we are all wondering on Business Today as to how to really fathom what's going on between Ukraine and Russia. The tensions that have escalated into a war situation right now, all across on the global equities, you are seeing a sharp impact of that as well. How should you, as investors, really understand the current situation? How bad can it get for your investments? And what should be your strategy as of now? Joining in to help us with all those insights is a very special guest with me. Mr. Sudeep Bandyopadhyay joins in, Group Chairman, IndiTrade Capital. Thank you so much, sir, for taking out time for us and for this discussion. Help me understand, it's been a crazy day right from the early morning. You must have started to get calls and these messages of Russia actually, sending in troops right there in Ukraine. How do you approach markets amid a war between Ukraine and Russia? Well, Sakshi, I think it's kind of an unprecedented situation we are seeing. We had a massive COVID globally, a pandemic, which is a black swan event. And now we have this Russia-Ukraine war. Till yesterday night, when we went to sleep, I think nobody expected this to happen. People were thinking that, okay, Russia has sent troops in the Donbass region, which is under their control. And that's where it is going to end. There's going to be some conferences, some meetings, and probably things will de-escalate. Unfortunately, today morning, I think we wake up to this news, and I think what's happening now is a full-scale invasion of Ukraine by Russian forces. There is aerial bombardment happening across the country. All the major Ukrainian towns have been affected, and the visuals are coming. So obviously, the global markets are extremely nervous. Now, I'll tell you a few things which really make the world market wary and worried. One is the commodity prices, beginning with the oil and natural gas. I think these prices are shooting through the roof. Oil has already crossed $100 Brent, and gas prices are shooting up. Yes. So there is a huge concern. The second part of it, which is not yet playing out, but the fact is, Russia and Ukraine both are large agri-commodity producers as well. Yes. So the fear is very soon that also will get impacted severely, and there will be concerns. Now, come back to India. What's happening? Now, India is definitely, as we all know, a very large importer of oil. That's the largest foreign exchange outgo happens on oil, and oil prices shooting up above 100 definitely affects Indian economy, affects Indian companies, capital market, pretty much everything. Second, we have a very high inflation, food inflation already, which the RBI is desperately trying to handle and also ensure there is a growth momentum doesn't lose pace. Under the circumstances, if there is further pressure on agri-commodities by imported inflation, I think that will be even very bad for Indian economy, markets, inflation, pretty much everything. So obviously markets are worried and there is sharp correction. Same for global markets. Nobody wants a full-scale world war because look at the situation. Now NATO and US, who have been talking about protecting Ukraine, they are in a fix. If they step in, I think that will translate into a world war. And nobody wants that. So it is extremely important that the situation does get de-escalated very soon. Otherwise, we are in a completely uncertain territory, and markets doesn't like uncertainty. Markets doesn't like war. So that's why we are seeing this correction. Absolutely, sir. And, at the context, you've helped us understand what this could mean for the overall economy and macro perspective with the already concerns that are emerging for markets and for investors. पर ऐसे समय में आप इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी क्या रेकमेंड कर रहे हैं? इस फॉल को खरीदारी करनी चाहिए, शॉपिंग लिस्ट रेडी रखनी चाहिए, या फिर कुछ और समय वॉलेटिलिटी को पास होने के लिए देना चाहिए, कुछ और करेक्शन के लिए वेट करना चाहिए? क्या सही रणनीति होगी ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए साक्षी जी, हम कहते हैं मार्केट में डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ. जब मार्केट जबरदस्त गिर रहा है ना, तब आप उससे थोड़ा दूर रहिए, वॉच करिए. पर ये बात से मैं सहमत हूं कि अब मार्केट के प्राइसेस जो कि बहुत एलिवेटेड लेवल पे थे, पिछले करीब 3-4 हफ्ते से मार्केट गिर रहा है, और ये गिरावट के बाद बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और इमीडिएटली खरीदना नहीं चाहिए, वेट करिए. और इसमें मैं 2-4 चीज जरूर निवेशक को बताना चाहूंगा. पहली बात तो ये है कि इस माहौल में
अगर ये वार का माहौल, ये टेंशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन परसिस्ट करता है तो करेंसी जरूर डिप्रिशिएट करे, क्योंकि करेंसी इस लेवल पे रहना बहुत मुश्किल है और करेंसी डिप्रिसिएशन आरबीआई भी रोक नहीं पाएगा। और ये अगर डिप्रिसिएशन होता है तो सबसे बड़ा फायदा इंडियन एक्सपोर्टिंग कंपनी, पर्टिकुलरली आईटी कंपनीज को होगा, लीडिंग आईटी कंपनीज को। ओके, ऐसे ही हमारा पॉजिटिव व्यू है आईटी कंपनीज पे, लीडिंग आईटी कंपनीज पे। और ये सिचुएशन में तो जरूर देखना चाहिए आईटी कंपनीज की तरफ, और ये आईटी कंपनी में खरीदारी का जरूर सोचिए। पर्टिकुलरली थोड़ा बहुत जो भी आईटी कंपनी में भी करेक्शन हो रहा है वो जरूर अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने का लंबी अवधि के लिए। सो आप एचसीएल टेक बोलिए, विप्रो बोलिए, इन्फोसिस, टीसीएस, ये जो लीडिंग आईटी कंपनीज हैं, यहाँ पे आपका शॉपिंग लिस्ट रेडी रखिए। जैसे ही मार्केट में गिरावट में थोड़ा बहुत सुधार आता है, बेझिझक खरीदिए। ओके, तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है थोड़े समय बाद जैसे ही सेटल हो, तो आपको कुछ पॉकेट्स यहाँ पर सर ने बताई हैं जहां पर आप निवेश करने की सोच सकते हैं। लंबी समय के लिए आपको फायदा हो सकता है लोअर डिप्स में खरीदारी करने का भी। मैं आपसे बाकी एसेट क्लासेस के बारे में भी पूछना चाहती हूँ कि ऐसे समय में हम देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और अनसर्टनिटी में हमने ये हिस्टोरिकली देखा है गोल्ड को सेफ हेवन एसेट माना जाता है। तो क्या इन्वेस्टर्स को इस समय पर गोल्ड में अपना निवेश बढ़ाने का सोचना चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए। देखिए, गोल्ड हजारों सालों से, जैसे आपने जिक्र किया, सेफ हेवन माना जाता है। कोई भी जंग के टाइम गोल्ड का प्राइसेस बढ़ता है, जो कोई भी अनिश्चयता के टाइम गोल्ड का प्राइसेस बढ़ता है, वही हो रहा है। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है। और गोल्ड, देखिए, हम हमेशा मानते हैं कि एक निवेशक के पोर्टफोलियो में लगभग 10% तक गोल्ड का होना जरूरी है। मार्केट जब बहुत बुलिश है तब भी मैं निवेशक को ये कहता हूँ कि एक आपका कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए, गोल्ड में थोड़ा निवेश करिए। अभी भी मैं वही बोलूंगा कि गोल्ड में जरूर निवेश रखिए, 10% तक गोल्ड में रखिए, पर ज्वेलरी मत खरीदिए। बुलियन या सरकार की जो गोल्ड बॉन्ड के स्कीम आते हैं उसमें निवेश करिए। ओके, और मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि कैश का कितना महत्व होगा ऐसे सिचुएशन में, कितना पोर्टफोलियो में आपको लिक्विडिटी रखना चाहिए, क्योंकि अभी भी जैसे आपने बताया कि अनसर्टेन माहौल है, हमें ये नहीं पता अभी इस स्टेज पर कि यहाँ से कितना और वर्स सिचुएशन हो सकती है या बेहतर हो सकती है। तो ऐसे में कैश का कितनी इंपॉर्टेंस होगी इस समय? देखिए, ऐसे अनिश्चित माहौल में कैश का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, पर बात यह है कि कैश किसके पास कितना है। अगर कोई निवेशित है मार्केट में तो मैं इस माहौल में उसको एग्जिट लेने की भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अनलेस लिवरेज्ड है, क्योंकि वो शायद गलत होगा, सब ऑप्टिमल होगा। पर ये बात जरूर, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कि अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा जब ये फॉल अरेस्ट होगा, जब ये फॉल बंद होगा, तब नीचे लेवल पे खरीदारी करना बहुत अच्छा होगा। तो अगर आपके पास कैश है उसको प्रिजर्व करिए, रेडी रहिए खरीदारी करने का। मैंने दिग्गज आईटी कंपनी में खरीदारी की सलाह दी है। आप और भी कुछ सेक्टर में देख सकते हैं, और आईटी में तो जरूर देखिए। जी, साथ ही आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जो कच्चे तेल का भाव है वो लगातार ऊपर जा रहा है। $100 आज क्रॉस हो गया, 103 भी हम लेवल अब देख रहे हैं। और क्योंकि हम एक ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, ये काफी ज्यादा कंसर्निंग बात हो जाती है। लेकिन मैं इंडिया इंक के लिहाज से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, अर्निंग्स के लिहाज से सवाल पूछना चाहती हूँ कि अभी तक Q3 में जो हमने थोड़े बहुत अच्छे नंबर्स देखे हैं, लेकिन अगर ये क्रूड ऑयल प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो क्या अर्निंग्स पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? क्योंकि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि कच्चे तेल को अपने रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज करते हैं। जी बिल्कुल साक्षी जी, देखिए, सबसे बड़ा जो मेरा शंका है वो एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उसको लेके है कि उसका प्राइसेस तो ऑलरेडी बढ़ गया है और भी बढ़ेगा। और करीबन 40% जो एक एयरलाइन का ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो एटीएफ होता है। उसमें अगर आपने 10, 15, 20% बढ़ गया है तो भयंकर हो जाता है एयरलाइन का। उस पर नजर रखनी पड़ेगी। दूसरी बात है, जो सारे कंपनीज जो ऑयल या ऑयल डेरिवेटिव्स यूज करते हैं, जैसे कि पेंट कंपनीज हो गए, तो ये सारे कंपनीज के फर्टिलाइजर हो गए, इन कंपनीज का रॉ मटेरियल कॉस्ट शूट अप करेगा, तो वहां पे भी मार्जिन प्रेशर देखने को मिलेगा। तो बहुत ही नाजुक स्थिति है, नजर रखना चाहिए। पर कुछ कंक्लूड करने का माहौल अभी नहीं आया है। ये आज सुबह, जैसे आपने बोला, हम लोग देख रहे हैं, आज सुबह ही शुरू हुआ है। फिंगर्स क्रॉस्ड, भगवान करे तो जल्दी अगर इसमें शांति बरकरार हो जाए तो अच्छा होगा ग्लोबल पीस के लिए, ग्लोबल मार्केट्स के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, और साथ में इंडिया के लिए भी अच्छा होगा।
Right. I have two more questions for you, sir. One being that, investors currently are definitely jittery. They were already getting worried with the challenges like you talked about: inflation, crude oil prices, rising interest rates, and now this conflict. Even though we were getting away from the third wave and we were hoping for more normalcy, this has come on as another challenge for them right now. So I want to understand from you, what is the advice that you're giving them at this stage? Because you've seen so many cycles and also many crisis situations that stock markets have witnessed over the years. So help me understand, what is the advice that you're giving them right now? जी देखिए, एक चीज तो मैं बताना चाहूंगा, मैंने जितने भी देखे हैं 92 के जो गल्फ वार वहां से हमने देखे हैं, तो हमेशा वार के टाइम एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है, मार्केट एक बॉटम रीच करता है और वहां से अच्छा टर्न अराउंड होता है। और नॉर्मली जो ट्रेंड है, जो एनालिसिस हमारे लोगों ने किया है, उससे लगता है ये जो 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 जो, जो बॉटम वाला फेज है वो 3 हफ्ता रहता है। पर देखिए, इसमें कोई ये जस्ट हिस्टोरिकल एनालिसिस है, डजंट मीन इट विल रिपीट इटसेल्फ। और ये इस टाइम में संयम रख के वेट करना, अगर आपके पास अच्छे शेयर्स हो निवेशित रहिए, अगर आपके पास अच्छे शेयर्स ना हो, लिक्विडिटी हो, तो वहां पे भी आप वेट करिए। जैसे ही एक फेज खत्म होता है, थोड़ा लगता है कि शांति अभी का माहौल आने वाला है, तब खरीदारी कीजिए। जब टर्न अराउंड हो रहा है तब खरीदारी कीजिए। हाँ, शायद आपको बॉटम में जो प्राइस था उससे 5-10% ऊपर मिलेगा, बट वही करना चाहिए। जब नीचे गिर रहा है तब खरीदारी मत करिए, यही सलाह दें। That's a very valuable advice, because most investors don't understand what is the right time to get in and what is the right time to exit. So here you've explained that now that they are falling, you must wait for the dust to settle and perhaps look for a time that when the turnaround is happening. That's a very important advice. One last question to you, sir. We have seen in the last 1.5, 2 years time, when the pandemic first hit us, between that time and now, we've seen a flurry of new investors enter the stock markets. Now, this is the sect of new investors that have not seen a bear phase. They have actually only seen markets rallying in a one-way trajectory on the up move. So I want to understand, is there a risk of them now running away with, now they are witnessing that the FIIs are also continuously selling off? And can that, perhaps destabilize the markets at this stage? Well, I think markets are already destabilized, Shakshi. So I don't think the investors will run away. I think predominantly because of the fact that the investors who came into the market, if you see during the pandemic, and this is something very interesting, this is the more educated lot, people who are trading online. And I would assume they have a certain level of education and background. So what is happening is probably they are a little more well-read, and they probably understand. And I think last 2 years, pretty much all of us, you, me, all of us have been telling that, guys, you haven't seen a downturn. So please be patient. Somewhere there will be a downturn. So I think they have got the message also. So I don't see there is a big panic. And we did see that. Remember, the market, even before today, market was falling. And Indian markets were correcting for last 10, 15 sessions on continuously. And in spite of that, we haven't seen a massive domestic sell-off. The FII sell-off was there, and that's predicated on a different risk-off mode of the investors because of US interest rate, geopolitical tension. But domestic investors were not selling. So I think that situation will not come. But I am a little worried about the LIC IPO and other IPOs which government or other companies were planning. Probably they will develop cold feet now and wait for dust to settle before they come. Okay, so do you expect LIC IPO to get further derailed and delayed right now? Well, I'm not here to make prediction on that, but looking at the market, I'm not sure whether it will be right to bring such a large IPO to the market unless the dust settles down on this. Understood, sir. Thank you so much for sharing your wonderful insights with all our viewers at this point in time when investors are a worried lot amid this crisis situation. But you've really helped us understand the right strategies to adopt with respect to investments, how much cash to preserve, whether it is with respect to investing in gold and finding opportunities in the safer sectors for the long term, like IT in the stock markets. A whole lot of insights right there. Thank you so much. It's always a pleasure having you with us, and hope to have you more and more for more interactions as well on Business Today. Thank you so much for your time. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.